Good morning, students. Welcome to Suraj School Bhiwadi. I am Taruna Saini, PGT Commerce. So today we are going to start a new chapter, chapter 9, that is areas of parallelogram and triangles. And today we will learn the topic figures on the same base and between the same parallels. So let's start. These are the contents of today. Exercise 9.1, question 1 we will do. Then we will start a theorem. Then we will start exercise 9.2, question 1. So before beginning the chapter, we must understood the topic name, that is areas of parallelogram and a triangle. Do you know the shape of parallelograms, students? Yes, very good. Opposite sides are parallel and equal. Opposite angles are equal. And diagonal bisect each other. And what is a triangle? Triangle is a polygon formed by 3-line segment. It has 6 parts, 3 sides and 3 angles. It has 3 vertices. So today we will learn the relationship between parallelograms and the triangles areas. Okay. So let's begin. Firstly, in your notebook, you have to write the learning objective of the chapter. This is chapter number 9, that is areas of parallelogram and triangles. You will write learning objective, introduction. Then you will write topic number 2, figures on the same base and between the same parallels. Then you will write parallelograms on the same base and between the same parallels. Then we will see triangles on the same base and between the same parallels, and last summary. So firstly, have an overview of it. Parallelogram is a quadrilateral having, what is the definition of parallelogram? It is a quadrilateral having one pair of opposite sides parallel and equal, or you can say 2 pair of parallel sides. And what is a triangle? Triangle is a polygon formed by 3-line segments. Then we will learn figure on the same base and between the same parallels. So suppose these are the parallel lines. Okay, so suppose if we draw another shape like this. So these are the figures on the base is same and parallel lines are same, and there are 2 figures, this one and this one. So these are the figures on the same base and between the same parallel. Also we can draw, suppose this is a parallelogram and we can draw a triangle here. Okay, so same base and they lie between the same parallel lines. So in the next 9.3 topic, we will see parallelograms on the same base and between the same parallel. Remember, areas are equal. Okay, areas are equal. If there are 2 parallelograms, if they lie on same base and between the same parallels, their area will be equal. Suppose this is ABCD, this is ABEF. So area of ABEF will be equal to ABCD. Okay, so areas are equal. And if we talk about the triangle and parallelogram on the same base and between the same parallels, then you will observe that triangle has the area half of the parallelogram. Area of triangle will be half of area of parallelogram. Understand? So let's start. Exercise. Which of the following figures lie on the same base and between the same parallels? So here you can look CD, same base, same parallels. Okay. So both the figures are on the same base. So what is the same base? DC figures, this triangle and this parallelogram. So this is yes. Then here same base but not between the same parallels. ये तो parallel line के नीचे ही रह गया. So this is not. Here yes, QR same base हो गया. And parallel lines के अंदर भी हैं दोनों, triangle भी और parallelogram. Yes. यहाँ पर ये नहीं, क्योंकि देखो same base पर नहीं है, ये इतना portion यहाँ पे रह गया है. No. यहाँ पर parallel line भी है और same base भी है. तो yes. और यहाँ पर तो ये छोटे छोटे हैं, तो कंप्लीट बेस पर कोई भी नहीं है. सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन बेटा? फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ. गॉट इट? नाउ वी विल अंडरस्टैंड अ थ्योरम. The theorem is
parallelogram on the same base and between the same parallels are equal in area. Parallelogram on the same base and between the same parallels are equal in area. You have to prove this. So let us, how we will prove it? Can you see that this is a parallelogram? So can this side is parallel to this side? Yes. So can we have that this angle and this angle is corresponding angle? Yes, very good. These are corresponding angles. Now, is this line parallel to this line? Yes. So again we can have that this angle and this angle, angle 3 and angle 4 are the corresponding angle. Yes, correct. These are corresponding angles. Let us draw a bigger diagram. Now beta, what do you see? That this is, suppose this is angle 1 and this is angle 2. These are equal. If this is angle 3 and this is angle 4, these are equal. Why 1 equal to beta? Corresponding. Why 3 equal 4? Because these are corresponding. And if the two angles are equal of these triangles, so third angle will also be equal. Third angle will also be equal. This 5 will equal to this 6. फाइन. एंगल सम प्रॉपर्टी के हिसाब से भी अगर आप करके देखेंगे कि एंगल 1 + 3 + 5 = 180, इधर से भी एंगल 2 + एंगल 4 + एंगल 6 = 180. तो 1 तो किसके इक्वल है? 2 के, और 3 किसके इक्वल है? 4 के. तो 5 किसके इक्वल आ गया बेटा? 6 के. सो व्हाट डू यू सी in the diagram? This angle equal to this angle and this angle equal to this, and this side is opposite side of parallelogram, so equal. So as A angle side angle by angle side angle criteria से दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट. ठीक है, दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट. अब दो ट्रायंगल जो कॉन्ग्रुएंट है उनके एरियाज भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल. तो एरिया ऑफ ट्रायंगल AED is equal to area of triangle FBFC. फाइन. अब आप इसमें ये वाला रीजन ऐड कर दो, ये जो आपको दिख रहा है EBCD वाला. ठीक है, एडिंग EBCD बोथ साइड्स. जब आपने AED में EBCD ऐड किया तो क्या बन गया? ABCD. ठीक है, क्या लिखेंगे आप? AED + EBCD और क्या बन जाएगा? ABCD. वेरी गुड. देन BFC में भी आपने सेम रीजन ऐड किया EBCD, तो क्या बन जाएगा आपका? आपका क्या बन जाएगा? BCFE. ठीक है, सो दोनों एरियाज आपस में क्या हो गए? इक्वल. जब आपने इस ट्रायंगल में ये वाला रीजन जोड़ दिया तो आपका क्या बन गया? पैरेललोग्राम. और इसी तरीके से जब आपने इस ट्रायंगल में ये वाला रीजन जोड़ दिया तो क्या बन गया? ये वाला पैरेललोग्राम. तो दोनों पैरेललोग्राम के एरियाज क्या हो गए बेटा? इक्वल. सो बाय पॉजिंग द वीडियो यू कैन हैव द स्क्रीनशॉट. टू पैरेललोग्राम्स ABCD ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन द सेम पैरेलल्स. प्रूव करना है दैट एरियाज आर इक्वल. वी विल प्रूव द ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर. Then we will add the same portion to both sides and you will get that parallelogram has the same base and same area. You can have screenshot or you can pause the video for doing your work. Now let us have next question, that is exercise 9.2 question number 1. ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. AE perpendicular to DC. ओके, AB 16 दिया है और आपको पता है कि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होती हैं? इक्वल. तो ये भी 16 सेंटीमीटर है और ये भी 16 सेंटीमीटर हो जाएगा. एंड AE आपका 8 सेंटीमीटर. 8 हो गया ये. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट. बेस इंटू हाइट. तो 16 इंटू 8 कितना हो गया? 128. अब इन्होंने बोला है जो CF है ना, अब दूसरा बेस ले रहे हैं. अब क्या ले रहे हैं? दूसरा बेस ले रहे हैं. अब ये वाला बेस ले रहे हैं और हमें ये पता नहीं है. और ये कितना हो गया आपका? 10 सेंटीमीटर. तो क्या करेंगे? AD × 10 इक्वल कितना आ गया? 128. तो AD कैसे निकाल लोगे? 128/10 यानी कि 12.8. यानी कि आपको इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? बेस इंटू हाइट का फॉर्मूला अप्लाई करना है. जब हमने CD बेस लिया तो हाइट हमने ली AE. जब हमने AD बेस लिया तो हमने हाइट ले ली CF. CD और AB आपस में इक्वल होते हैं अपोजिट साइड. ये आपका 8 है. AD आपको फाइंड करना है और ये आपका 10 है. 16 8s are 128.
और 10 इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड में 12.8 सेंटीमीटर. By pausing the video, you can have the screenshot, students. Thank you so much. God bless you.